Okay. Firstly, good morning, all of you. Today we will start. I think last class we was discussing about energy flow, in which we was discuss about 10% law, and there are many things. Last lecture we had talked about. Today we will start a new topic, that is ecological succession. Ecological succession, yeah, we can say that the biological succession, that is the biological succession, yeah, biotic succession. You can also say that. You can also say that this is the ecological succession, yeah, biotic succession. We can say that that is a process. Succession is, that is a process in which the development of ecosystem, in a series of, we can say that, of directional changes. So in a simple way, we can say that this is a change of ecosystem. This is a change of ecosystem. What? Ecological succession. This is a change of ecosystem through, we can see the directional changes in a series. Directional changes in a series. Directional changes in a series. That is biotic succession. Yeah, we can say that ecological succession. Say it. This is the part of ecological succession. This is ecological succession. देखो, लाइफ, जनरेशन ऑफ लाइफ एक ऐसे पार्ट के अंदर सबसे पहले सरवाइव करती है जहां ओनली एक स्मूथ स्टोन या स्मूथ रॉक, सिर्फ उसको टेम्परेचर, सिर्फ उसको एनवायरमेंट, ये कंडीशंस उसको मिली. और कंडीशन मिली आफ्टर सम टाइम, सम टाइप ऑफ मॉजेस या ग्रासेस डेवलप्ड. आफ्टर सम टाइम, some type of plants are developed. After some time of trees, and after that, देखिए, there are two type of succession. Ecological succession, there are two type. First one is primary, second one is secondary. Primary succession एक तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक डेवलपमेंट हुआ. सेकेंडरी सक्सेशन की जो डेवलप्ड ट्री था वो बिल्कुल ड्राई हो गया. आफ्टर ड्राइनेस एक बार फिर से डेवलपमेंट हुआ. ठीक है. अब सपोज इट, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 15 ईयर तक स्टडी किया. ठीक है, 15 ईयर तक आप लोगों ने स्टडी किया. आप लोग का सिलेक्शन हो गया, किसी पीसीएस में सिलेक्शन हो गया आपका. आपको 2 ईयर हो गया जॉब करते हुए, आपको 5 ईयर हो गया जॉब करते हुए. आपका मन हुआ नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मेरे को करना है क्या, यूपीएससी करना है, मेरे को यूपीएससी करना है. आप लोगों ने फिर से स्टार्टिंग की और अब आप लोग एक आईएएस है. ठीक है,
आप लोगों ने एक तो स्टार्टिंग से लेकर यहां ये जो पीसीएस तक का सफर है ये तय किया, दैट इज द प्राइमरी सक्सेशन। और एक आपका टच हट गया बिल्कुल एजुकेशन से, आप 5 साल से टच में है ही नहीं, तो आई थिंक आपको दोबारा से एक न्यूली स्टार्टिंग आप लोग को करना पड़ेगा। यू विल स्टार्ट अ न्यू फॉर्मेशन, यस और नो? दैट इज द सेकेंडरी सक्सेशन। एक सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझा दिया। प्राइमरी वी कैन से दैट अ स्टार्टिंग प्रोसेस, एंड सेकेंडरी वी कैन से दैट a damage process can start in a new formation, a damage process, then that is the secondary succession. Now write down, ecological succession or ecological succession or biotic succession। ecological succession or biotic succession, the process in which the process in which communities of plant and animal species, community of plant and animal species in an area are replaced or changed into another community of plant or animal species over a period of time, that is ecological succession। that is universal process of directional changes in vegetation, universal process of directional changes in vegetation, or डाले or we can say that it is the process of development of ecosystem। जो लोग लाइव कनेक्ट हैं आप लोग भी रिटर्न करें। it is the process of development of the ecosystem through a series of directional changes। Tanuj Raghav, of a series of directional changes साउंड क्लियर है? हाँ यही कर लो। थ्रू आ सीरीज डायरेक्शनल चेंजेस, लेट्स एग्जाम्पल ऑफ दिस। फर्स्टली
कैन ड्रॉ। आप अपने एंड से एक बार चेक करो सर। तनुज, राघव, यहां आवाज एकदम से क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक या इकोलॉजिकल succession. Starting of this, suppose it there is a bare rock. In bare rock, after some time, some mosses या lichens are formed. Some mosses or lichens are formed. After the formation of lichen and mosses, after some time, देखो आप लोग देयर आर 7th क्लास, तो आप लोग पिछली 6 क्लासेस में यही रेगुलर करते आए हैं कि एक इकोलॉजिकल डेवलपमेंट आप लोग देख रहे हैं। देयर आर सम ट्रॉपिक लेवल्स, 1 ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4, है ना। There are energy change, pyramids of number, pyramids of biomass, pyramids of energy, है ना। यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है सर। तो आप यहां भी क्या है, एक डायरेक्शनल चेंज है ना, डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम थ्रू अ सीरीज ऑफ डायरेक्शनल चेंज ना। ऐसा नहीं है कि बेयर रॉक से डायरेक्ट ट्री आ गया, नहीं। इस अर्थ पर या आज जो मार्स पर हम लोग सर्च कर रहे हैं या मून पर सर्च कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं है कि आप पहले नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे उस टाइम कुछ नहीं था, आज जाएंगे बहुत ट्री मिलेंगे वहां पर, ऐसा नहीं है, है ना। चेंज आएगा तो देयर आर डायरेक्शनल चेंज आएगा, एक सीरीज के अंदर चेंज आएगा, यस और नो। तो सबसे पहले जैसे बेयर रॉक था, बेयर रॉक के बाद सम लाइकेंस एंड मोजेस आर, सर। After the formation of this, some weeds, some weedy plants, weeds, yeah, we can say that grass are formed. Some weed and grass are formed. After the formation of this, some herbs, yeah, shrubs are formed. Yes or no? Some herbs and shrubs are formed. After the formation of herb and shrub, trees are formed. Yes or no? Yes or no? Sir, this is the first part. This is the first part. And this is the last part of ecological succession. Now we will discuss about ecological succession. प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. Not discussing about primary and secondary succession. This is ecological succession. And ecological succession start the first part of this. Starting the first part of this. This is the starting of ecological system, and this is the ending of ecological system. Yes or no? First part and last part. Yes or no? This is, we can say that कि जो स्पीसीज का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग ऑफ स्पीसीज, वो यहां से हुआ, बेयर रॉक से नहीं हुआ. दिस इज स्टार्टिंग of species. Yes or no? So we can say that this part known as pioneer community. Pioneer community. Pioneer. Pioneer. Community. This is the starting community, and this is the ending community. Sorry.
this is the ending community. This is the ending community. Ending community, complex community. This is the complex community. This is the pioneer community. This is the complex community. Write down. Complex community, yeah, we can say that climax community. This is the climax. मूवीज में आता है ना क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स कम्युनिटी. संतोष गोयल, गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग. तनुष, आई थिंक ऑल क्लियर. आप एक बार चेक करें. और जितने भी लोग कनेक्ट हैं सेशन को शेयर कर दें और लाइक करें सर. हाँ, सब्सक्राइब ऑल्सो. Good. Done, sir? Right, sir? Now, the process of ecological succession. Now, the process of ecological succession. What is the process? We can say that firstly, primary process या primary community, then intermediate community, then climax community. Yes or no? We can say that it is a multiple process, because in intermediate community there are multiple changes. Yes or no? Firstly, weed and grass, then herb, then shrub, then tree. There are multiple changes. Yes or no, sir? Maybe aquatic plant, maybe dry areas plant, maybe bare rocky plant, कोई भी plant हो सकते हैं. So we can say that in intermediate community there are many kind of changes. So the ecological succession is a multiple process and it is a unidirectional process also. It is a
unidirectional process. Yes or no? We can say that the entire sequence of this community, yeah, we can say that intermediate community known as, this is known as Shere. Yes or no? And this is the primary part. The primary part, we can say that it is the beginning of life from lifeless process. Yes or no? It is the beginning starting of life from lifeless process या lifeless areas. This is the intermediate process and this is the climax process. We can say that it is the stable and most suitable community. Yes or no? It is the stable and most suitable community. This is intermediate and there are entire sequence found in this process. This process is known as Shere. Then this is the process of ecological succession. If you want, then you can note down. जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं सर. Then sir, there are three parts of ecological succession. Yeah, we can say that this is the process of ecological succession. Primary community, yeah, primary community, then intermediate community, then climax community. Primary community, it is the starting of life from lifeless areas, and intermediate community, we can say that the entire sequence of the community, is called, yeah, known as Shere. And the climax community, it is a stable and suitable for ecological community. Please. Ecological succession is a multiple process and we can say that it is a unidirectional process. कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि
क्लाइमेक्स कम्युनिटी कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट कम्युनिटी देन प्राइमरी कम्युनिटी, नहीं, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। Then sir, now intermediate community. Now intermediate community known as Sherry. Now there are some example of this. Name of them. Then area of succession. Area of succession. You can write down. Number 1, hydrocerai. And hydrocerai found in aquatic areas. Aquatic areas. Next one is XERO, zero cerai, found in dry areas. Dry areas. Then next one is litho cerai, found in bare rock. Then Somocerai, found in sandy rock. And last, Halocerai, found in saline areas. This is the intermediate community. अब सपोज इट, देखिए भाई सम एक्वेटिक एरियाज हैं, वहां भी तो प्लांट आप लोग के सस्टेन करते हैं. आपका ड्राई एरियाज है वहां भी सस्टेन कर रहा है, आपका बेर रॉक है वहां भी सस्टेन कर रहा है. दैट इज द इकोलॉजिकल सक्सेशन. आपके जितना भी एरियाज है सब जगह आप लोग का जो है फॉर्मेशन होगा. अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था बेयर रॉक या बेयर एरियाज, ठीक है. एग्जांपल इज दिस. वी कैन राइट फर्स्ट जैसे बेयर रॉक, फर्स्ट लाइकेन और मोजेस, then weed or grass, weed then grass, then herb, then shrubs, then tree. This is the pioneer and this is the climax. This is known as lithocerai. Yes or no? This is the lithocerai.
can Pushpendra. Okay, sir, namaskar. This is the lithospheric. First one, bare rock, then lichen and mosses, then weed, then grasses, then herb, then shrub, then trees. So we can say that this is the lithospheric. Lithospheric is the part of intermediate community. There are 5 parts of intermediate community: Halosphere, Lithosphere, Xerosphere, Somenosphere, and Hydrosphere. Now we will discuss about the stage of ecological succession. Now we will discuss about the stage of ecological succession. Ecological succession. Write down, there are 5 stages of ecological succession. There are 5 stages of ecological succession. Ecological succession. अब सपोज इट, आप लोग यहां यूपीएससी की जो दौड़ है इसमें अगर अकेले होते तो आप लोग ही जीतते। किसी ने कहा कि मैं सेकंड आया, बहुत अच्छी बात है। दौड़ने वाले कितने थे? 2 ही थे। तो आपको तो सेकंड आना ही था, है ना। अब सपोज इट, देखिए आप लोग चेक करें सर, दिस इज द बेयर रॉक, है ना। अब बेयर रॉक से स्टार्टिंग होना है किसका? लाइकेन का और मॉसेस का। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, this is the first stage of formation of ecological succession. Yes or no? So first stage known as nudation. Nude means there are bare rocks. Yes or no? There are bare rocks. So first stage is nudation. Write down, nudation. First stage is nudation. Write down. It means the formation of nude, or it means the formation of nude or bare rock by flooding, erosion, landslide, volcano, etc. After this, there are some different kind of species arrival. This is known as, second part, invasion. 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 It means
It means the arrival of different species then after the sustainable of different species, अब क्या हो गया, उनमें कंपटीशन हो गया क्योंकि लिमिटिंग एरिया है. अब लिमिटिंग एरिया है, ग्रोथ सबको करना है. तो थर्ड पॉइंट इज थर्ड स्टेज, दैट इज कंपटीशन. राइट डाउन, थर्ड स्टेज दैट इज कंपटीशन. इट मींस third stage that is competition. It means growth of species in limited areas resulting in competition for food and space, After the survival of different kind of species, अब क्या होगा? It required temperature, it required soil, it required pH value. Yes or no? It required some kind of reactions, we can say that. So fourth point, that is reaction. Fourth point, that is reaction. Write down. It means modification of the environment. It means modification of the environment. Due to the influence of organism, such as change in soil structure, pH, temperature, etc. Then last one is the arrival of stability. Yes or no? We can say that the final stage. So write down stabilization, fifth or last part, that is stabilization. It means arrival of the final stages, or climax community, it maintains equilibrium of the ecosystem. So this is the stage of ecological succession. There are 5 parts. First one is nudation, and second one is invasion, third is
competition, या we can say that co-action. Fourth is reaction, and last, this is stable state. Stabilizing. This is the final and last stage. This is stabilizing, yeah, stabilization. Yes or no? Any doubt? Stabilization. Stabilization. Stable state, we can say. This is the stage of, we can say that these are the stage of ecological succession. जो लोग लाइव हैं, ऑनलाइन हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. चलिए सर, अब एक बात बताइए, मैंने आफ्टर जैसे स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास आप लोगों से ये पूछा था मैंने, है यही पूछा था भाई. आप एक बात बताइए कि आपको पीसीएस बनने के लिए आपको टाइम लग गया कितना? 15 ईयर. स्टार्टिंग आप लोगों ने स्कूलिंग स्टार्ट किया, फिर इंटर, कॉलेज, और उसके बाद आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे और आप लोगों ने ज्वाइन किया एक पीसीएस. अब इसके अंदर 15 ईयर का टाइम लग गया, बट यहां आप लोगों ने आफ्टर 5 ईयर दोबारा से स्टार्ट किया, तो इन दोनों में कम टाइम किस में लगा? यहां तक पहुंचने में. यस और नो? तो ये एक स्लोअर प्रोसेस है, ये एक फास्टर प्रोसेस है. यस और नो? नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. राइट डाउन टाइप ऑफ ecological succession. Type of ecological succession. Type of ecological succession. First one is primary succession and second one is secondary succession. First, primary succession, and second, primary succession, we can say that the life beginning process from lifeless areas. Secondary succession, it occur when the primary succession get destroyed. When the primary succession get destroyed after the survival of ecosystem, then it will start a secondary succession. Yes or no? So now write down a difference between primary succession and secondary succession. Primary succession and secondary succession. Write down in primary succession. First point. It is the life starts in a lifeless areas, where soil is absent,
soil is absent. Where soil is absent. In secondary succession, it occurs when the primary ecosystem get destroyed, when the primary ecosystem get destroyed. It is slower process. Primary succession, it is a slower process. It is a slower process. And secondary succession, it is faster. It is faster due to the presence of soil. Then some example of primary succession. Example of primary succession, write down: bare rock, then lichens. एक डायरेक्शनल सीरीज मैं आप लोगों को रिटर्न करा रहा हूं, ठीक है. फर्स्ट वन इज बेयर रॉक, then lichens. You can write this type of arrow. You can write lichens, then small annual plants, annual plants, then grassland, then grasses, grassland means grasses, then grasses, shrubs, and shade intolerant trees such as pines. Then shade tolerant trees such as oak. अब क्या हुआ सर? अब क्या हुआ? जैसे अच्छा आपके सामने एक फॉरेस्ट आ गया, अब सडन उस फॉरेस्ट में आग लग गई, ठीक है. फॉरेस्ट गेट फायर. अब उस फायर की वजह से सब कुछ खत्म हो गया. अब जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से सब कुछ स्टार्ट होगा, दैट इज सेकेंडरी. Yes or no? So example of secondary succession is fire, जो टेम्परेचर को ज्यादा टॉलरेंट ना करे. कुछ हैं जो टेम्परेचर को टॉलरेंट करे, पीएच या टेम्परेचर. नाउ example of secondary succession, this is fire, yeah, any disaster we can say that. Then grasses, then shrub, pine, unmatured oak,
unmatured oak, then mature oak, then matured oak. अब देखिए सर, सक्सेशन मीन्स वी कैन से दैट अ डेवलपमेंट. अब ये जो सेकेंडरी सक्सेशन का स्टार्टिंग है, अब सेकेंडरी सक्सेशन का जो स्टार्टिंग है वो फायर की वजह से, वोल्केनो की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, देयर आर मेनी टाइप ऑफ डिजास्टर्स, किसी की वजह से इसका स्टार्टिंग हो सकता है. कुछ टाइप और है इकोलॉजिकल सिस्टम के. आप लोगों ने जो डिस्कस किया है वो इकोलॉजिकल सिस्टम के आज तक आप लोगों ने दो टाइप डिस्कस किए हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. बट देयर आर टू टाइप मोर, देयर आर टू टाइप मोर. मींस एक तो वो इकोलॉजिकल सिस्टम है जो बायोटिक कंपोनेंट से हो, एक वो इकोलॉजिकल सिस्टम है जो अबायोटिक कंपोनेंट से हो. अब सपोज इट कोई वोल्केनो आ गया, वहां भी तो बायोटिक सिस्टम, वहां भी तो एक सक्सेशन फॉर्म होगा. आफ्टर फायर वहां भी तो एक बायोलॉजिकल या कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा. सो देर आर या वी कैन राइट अदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. देर आर टू टाइप, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक. ऑटोजेनिक इन विच द बायोटिक फैक्टर्स आर फॉर्म ecological succession, and allogenic means abiotic factors form ecological succession. Yes or no? Write down other type of ecological succession. There are two types, autogenic and allogenic. Autogenic and allogenic. Write down in autogenic. It is derived D-R-I-V-E-N, by biotic factors or living organism of the community. First point in allogenic, it is derived by abiotic factor or external factors. ठीक है सर. अब देखिए जो ऑटोजेनिक है, अब ऑटोजेनिक स्टार्ट कब होगा भाई? एक बार बायोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो गया, फिर कोई फायर या कोई ऐसा पार्ट आ गया, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, तो बायोटिक फैक्टर पहले से ही थे, अब बायोटिक फैक्टर से स्टार्ट हुआ है ना, तो सेकेंडरी सक्सेशन यहां से स्टार्ट होगा. अब यहां देखिए एक बेयर रॉक इज अ बायोटिक फैक्टर, यस और नो? और बेयर रॉक पर अगर सस्टेनेबल पार्ट अगर है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है ऑन बेयर रॉक, देन वी कैन से दैट दिस इज द एलोजेनिक, बिकॉज बेयर रॉक इज अ बायोटिक पार्ट. यस और नो? राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट in autogenic. Secondary succession starts with autogenic succession.
Now allogenic primary succession begins. Primary succession begins with allogenic succession. With allogenic succession. With allogenic succession. And proceed to autogenic succession. Autogenic succession and proceeds to autogenic succession. Example of autogenic, write down. Example of autogenic: dead organism material in soil. Dead organism material in soil. Dead organism material in soil changes the structure of soil. Changes the structure of soil. Now the example of allogenic: volcanic eruption, flood, etc. Volcanic eruption, flood, and etc. etc. So this is the part of ecological succession. Type of succession agents. Now write down a small term, that is ecosystem services. There are 4 types of ecosystem services. Write down small term, ecological services. The benefits people obtained from ecosystem. The benefits people obtained from ecosystem called ecological services. There are 4 types of ecological services. There are 4 types of ecological services. Provisioning services. I'll explain one by one. First, write down provisioning services. Second one is regulating services. Third one is sporting services. And fourth and last one is cultural services. Cultural services. In provisioning services, we can say that a raw material. अब सपोज करो आपको ये बोला गया कि आप 6 लोगों का खाना बनाएंगे, ठीक है, बट आपके पास जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो एक आदमी का है, तो क्या आप बना सकते हैं? भाई इकोलॉजिकल जो सस्टेनेबल पार्ट कब होगा, स्टेबलाइजेशन कब होगा? जब आपके पास रॉ मटेरियल कंप्लीट होगा, आपके पास फूड होगा, आपके पास रॉ मटेरियल, आपके पास जेनेटिक रिसोर्सेस, आपके पास वाटर प्योरिटी। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? एक पीटी एग्जाम क्लियर हो गया बच्चे का, एक प्रोविजनल पार्ट उसका रेडी हो गया आईएएस बनने के लिए, उसका मेंस क्लियर हो गया, दैट इज द प्रोविजन पार्ट। इसी को तो प्रोविजन पार्ट कहेंगे, है ना? यू कैन राइट इन प्रोविजनल सर्विसेज, नंबर 1 फूड, नंबर 2 रॉ मटेरियल, number 1 food, number 2 raw material,
And number 3, water purity. So number 3, genetic resources. Number 4, water purity. Number 5, biogenic minerals. Number 6, energy. And then ornamental services. अब इन सबको रेगुलेट करेगा, प्रोविजनल को रेगुलेट करेगा कौन? रेगुलेटिंग सर्विसेज। आपके पास अगर रॉ मटेरियल है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास जेनेटिक रिसोर्सेस है, तो अब उनको रेगुलेट करेगा। जो रेगुलेट करे, दीज आर रेगुलेटिंग सर्विसेज। राइट डाउन कार्बन सिक्वेंसरेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, predation regulates prey population, waste decomposition and detoxification, then pest and disease control, फ्लड प्रोटेक्शन, जो फ्लड से प्रोटेक्ट कर रहा है, दिस इज द रेगुलेटिंग सर्विस। नेक्स्ट वन इज स्पोर्टिंग सर्विसेज, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन, oxygen production, and last one, that is cultural services. Cultural services mean spiritual services, historical services, recreational experience, including eco tourism, मीन्स जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं सर, रिक्रिएशनल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इको टूरिज्म, साइंस एंड एजुकेशन, एंड लास्ट वन थेरेप्यूटिक सर्विसेज। वी कैन से दैट द मेडिकल सर्विसेज, एनवायरमेंट से, सिर्फ एनवायरमेंट से, बट आजकल उनको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हाँ एलोपैथी में कन्वर्ट कर रहे हैं आजकल। Done, sir. And now is the most important part for you, TEEB, T-E-E-B, TEEB. Then now the economics of ecosystem and biodiversity, TEEB. अब एक बात बताइए, इकोनॉमिक्स और इकोसिस्टम, या तो ह्यूमन इकोनॉमिक्स को ग्रो कर ले, वो अगर इकोनॉमी को ग्रो करेगा तो इकोसिस्टम डाउन होगा। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये, और अगर इकोसिस्टम को ग्रो करने लग गया तो उस कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन
एक आप लोगों ने सुना होगा G8, है ना, G8 2007 में लॉन्च द G8 मीटिंग ऑफ एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स ऑफ पोस्टडम, जर्मनी के अंदर 2007 में। TBIS funded the European Commission, Germany and the United Kingdom, Norway, Netherlands and Sweden. Managed by the United Nations Environment Program UNEP as the part of Green Economy Initiative. मैंने आपको पहले भी कहा था सर, और आज फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं। देखो आज जो डेवलपमेंट है ना, अगर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है देन यू कैन से दैट दिस इज द डेवलपमेंट, और अगर एनवायरमेंट को डेवलप ना करके आप लोग डेवलपमेंट के सोच रहे हैं तो आप लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे। दिस इज द फैक्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर नहीं समझ में आया, कहो सर, कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। यूपीएससी एक बात कहता है कि कंफ्यूज जो हो गया वो क्लास में नहीं बैठेगा फिर, क्योंकि उसका ब्रेन कहीं और चला जाएगा। जो बच्चा क्लास में कंफ्यूज है वो क्लास में नहीं है, वो कहीं और घूम रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन है, इमीडिएट क्लियर करना चाहिए क्लास के अंदर, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। यस और नो? चलिए अब देखिए, सपोज इट, आप लोगों ने अभी हम किसी भी उसकी बात करते हैं, हाईवे की बात करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस गया है तो वहां के जितने भी प्लांट्स हैं उनको हटाया गया होगा रास्ते से, है ना। एक प्रोग्राम चल रहा है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होना चाहिए। आपने क्या किया, रोड निकालने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे जो ट्रीज थे उनको हटा दिया गया रास्ते से, बहुत सारी मोजेस थी, बहुत सारे ग्रासेस थे, बहुत सारे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्ब्स थे, उन सबको हटा दिया। अब आपको क्या करना है, आप देखें सर, जितने भी हाईवेज हैं उन सब के बीच में ग्रीनरी प्रोजेक्ट चला रखा है बाय इंडियन गवर्नमेंट, और साइड बाय साइड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांटेशन वी कैन सी। जितने ट्रीज, जितनी चीजें आप लोगों ने वहां से रिमूव की थी उससे डबल आप लोग वहां अरेंज करेंगे, देन यू कैन से दैट दिस इज द डेवलपमेंट। एनवायरमेंट को हार्म करें और डेवलपमेंट करें, वो डेवलपमेंट नहीं है आज के दिन। आफ्टर पेरिस एग्रीमेंट, आफ्टर 2020, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट 2021 में अप्लाई हुआ है, 2020 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चल रहा था। ठीक है, अब मैं ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके सामने रखूंगा, बट यहां पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने वो ये डिस्कशन है सर कि हमारा यहां जो पार्ट है, हम ये बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर है, एनवायरमेंटल अगर डेवलपमेंट है साथ साथ, तो उसे डेवलपमेंट कहेंगे, एक नॉर्मल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। कि अगर आप एनवायरमेंट को हार्म करके डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट नहीं काउंट होगा। आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो उस ट्री, जितना भी ट्री आप लोगों ने वहां से रिमूव किया है, एनवायरमेंट को सस्टेन करने के लिए आपको वहां पर एनवायरमेंटल जोन क्रिएट करना पड़ेगा। आप देखें हाईवे के साथ साथ एनवायरमेंटल जोन, इकोलॉजिकल जोन बने हुए हैं। आप जानना कभी एक काफी बड़ा एरिया होगा, उस एरिया के अंदर प्लांटेशन होगी सर, वो गवर्नमेंट एक्वायर्ड एरिया होता है। और आप 4 लेन हाईवे है, 8 लेन हाईवे है, 6 लेन हाईवे है, उसके बीच में आपको प्लांटेशन मिलेगी, ग्रीनरी मिलेगी, आपको साइड के अंदर प्लांटेशन मिलेगी।
ठीक है, मैंने एक दिन और कहा था कि 7% एरिया है रेलवे के पास इंडिया का, 7% एरिया। अब उसका यूज करना कैसे करें यूज, तो इंडियन गवर्नमेंट प्लान कि वहां जेट्रोफा के प्लांट लगा दो। जेट्रोफा इज अ बायोडीजल प्लांट, तो वहां जेट्रोफा के प्लांट लगा दो। ये चीजें, ये कुछ बायोडीजल, वी कैन से दैट। देखो अभी क्या है, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स ज्यादा है डीजल के अंदर, है ना। डीजल इज अ काइंड ऑफ एल्कोहल, इज अ काइंड ऑफ इथेनॉल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी डीजल के अंदर हम इथेनॉल ऐड कर रहे हैं, और इथेनॉल इज अ बायोडीजल विच कैन बायोडीजल कैन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेट्रोफा प्लांट। तो जो जेट्रोफा प्लांट है, अभी तक क्या था, वो 7% एरिया जो रेलवे के पास था वो किसी यूज का था ही नहीं। तब उसके साइड बाय साइड क्या लगा दिया, जेट्रोफा लगा दिया। अब उस जेट्रोफा से जो बायोडीजल मिल रहा है उसको पेट्रोलियम में ऐड कर रहे हैं, जिससे पोल्यूशन या जो इमिशन पावर है वो कम हो जाए पोल्यूटेंट पार्टिकल्स की। ये 10% 2022 दिसंबर हम लोग 10% जो बायोडीजल प्रोग्राम है बाय इंडियन गवर्नमेंट, उसके थ्रू हम लोग उसको ऐड कर चुके हैं। अब 2030 तक उसको 20% इंक्रीज करना है, ये टारगेट है बाय इंडियन गवर्नमेंट। और 2050 तक हम 50% बायोडीजल ऐड करना स्टार्ट कर देंगे इन नॉर्मल पेट्रोलियम। सर 2047 इज द लास्ट ऑफ पेट्रोलियम, 2047। अब क्या करेंगे, लाइफ कहां जाएगी, अब लाइफ कहां जाएगी, अगर 2047 तक पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो लाइफ कहां जाएगी, सीएनजी की तरफ, गैसेस की तरफ। बट गैसेस भी 2100 तक एंड हो जाएगा। तो क्या हुआ, फिर क्या करेंगे। आप लोग एक बात जानते हैं, इंडिया सोलर एनर्जी पर काम कर रहा है। एक दिन मैंने आपको बताया था, सनलाइट 80 डेज, 100 डेज, 180 डेज, 300 डेज बताया था मैंने आपको। 2018 में गुरुग्राम ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन गुरुग्राम, वो इसी वजह से सस्टेन किया गया है और इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, सोलर एनर्जी को कंज्यूम करने की। तो वी कैन से दैट द नेक्स्ट एरा सोलर एनर्जी एरा, और द लीडर ऑफ दिस सोलर एनर्जी इज इंडिया। ठीक है सर, गुड। नाउ सर दिस is the most important part. Now you can write, TEEB, the economics of ecosystem. TEEB, the economics of ecosystem and biodiversity, the economics of ecosystem and biodiversity, TEEB, launched at the G8 meeting, of environment ministers in Potsdam, Germany in 2007. In 2007, TEEB is funded by the European Commission.
TEEB is funded by the European Commission, Germany, United Kingdom, Norway, Netherlands, and Sweden. It managed by United Nation. It managed by UNEP, United Nation Environment Program. As a part of its green economy initiatives, GEI, GEI. It managed by the United Nation Environment Program as a part of green economy initiatives. This is the most important for you. ठीक है सर। और जैसा मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पूरा एक जो पार्ट हमारे एग्जाम से रिलेट होगा वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। Now, write down. Now, the next part, that is biochemical cycle. This is the fourth chapter. This is the fourth chapter. First chapter is introduction of ecology. Second chapter, energy flow and nutrients. Third chapter is ecological succession, and fourth chapter, that is biochemical cycle. There are many type of cycles: carbon cycles, oxygen cycle, sulfur cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle, okay, water cycle. So write down biochemical cycle. Biochemical cycle, it refer to the movement of nutrients. It refer to the movement of nutrients between. It refer to the movement of nutrients, biotic and abiotic factors of an ecosystem. We know very well energy flow in unilateral या unidirectional. Yes or no? So write down energy flow in a unilateral. Energy flow in a unilateral direction, whereas nutrients flow in a cycle direction, just like that. Flow in a cycle direction. There are
we can say that there are two type of biochemical cycle. First one is gaseous bio, we can say that biogeochemical cycle, and second one is sedimentary. Write down, second one is sedimentary biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle, second one is in gaseous cycle there is water cycle या water vapor cycle, carbon cycle, oxygen cycle, and nitrogen cycle. And sedimentary biogeochemical cycle, first is phosphorus cycle, second is sulfur cycle, we will discuss about one by one. Gaseous cycle and sedimentary cycle with fully explanation. ठीक है सर, क्योंकि मेंस का पार्ट है यहां से जो आप लोग का होगा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन आपको मेंस का पार्ट यहाँ ड्यू टू मेंस आपको रिटर्न यहाँ करना पड़ेगा. So now we will start. Write down, आप लोगों ने ये टाइप ऑफ डन. राइट डाउन अ कॉमन लाइन. Based on the nature reservoirs, based on the nature of reservoirs, the biogeochemical cycle can be classified into two types. First is, write in a common line, a gaseous cycle reservoir, a gaseous cycle reservoir in the air or the ocean, in the air or the ocean, bracket, via evaporation, bracket close, comma, and sedimentary, in which the reservoir is earth's crust, earth crust. Next point, gaseous cycle tend to move more rapidly than do sedimentary ones,
sedimentary ones, and to adjust more readily to change in the biosphere because of the large atmospheric reservoir, because of the large atmospheric reservoir. Means, what is the mean of this line? This line says that क्या कि जो गैसियस प्रोसेस है वो फास्टर देन सेडिमेंट्री प्रोसेस, ये जो साइकिल है इनका कन्वर्जन, इनका जो साइक्लिक पार्ट है इज फास्टर देन सेडिमेंट्री रिएक्शन. इनको चेंज होने में टाइम लगता है, इनको चेंज होने में टाइम नहीं लगता. ये आपको इजी आपका चेंज है, ये टफ चेंज है. कौन? सेडिमेंट्री रिएक्शन. डन सर. नाउ नेक्स्ट वन इज next heading, that is water cycle. The water cycle involves the continuous movement of water within the earth and atmosphere. It is a simple circular cycle of evaporation, condensation and precipitation. Next point, water cycle is a complex system. Water cycle is a complex system that includes many different processes. There are many different kind of processes, just like ice convert into water stem, water directly convert into steam या vapor, sea water convert into vapor, then after that cloud convert into water with the process of condensation. There are many kind of processes. So next point is, liquid water evaporates into water vapor, condenses to form clouds, and precipitates back to earth in the form of rain, and snow.
नेक्स्ट solid ice and snow, solid ice and snow can turn directly into gas, that is known as sublimation. Latent heat of vaporization, very good. You can write in bracket sublimation. The opposite can also take place. The opposite can also take place when water vapor becomes solid, bracket deposition. Deposition. You can say that snow convert into vapor, that is sublimation, and vapor convert into snow, that is deposition. Then any doubt? Write down one more point of water cycle, then I'll explain through structure. Then write down water in different phases moves through the atmosphere. नहीं इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है. Water in different phases move through the atmosphere, means we can say that transportation, bracket transportation moves through the atmosphere, bracket transportation, full stop. Liquid water flow across land comma into the ground full stop. Groundwater moves into plants and evaporates from plants into the atmosphere. Into the atmosphere. ठीक है सर. आई थिंक ये प्रोसेस मैंने जो आपको रिटर्न करा है इसमें से ऑलमोस्ट क्लियर होगा, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है थ्रू फिगर वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, है ना. एक्चुअल में मेरी 1 बजे क्लास होती है, मैं एग्जैक्ट टाइम से पहुंच जाता हूं यहाँ. तो मेरी थ्योरी ये रहती है कि एग्जैक्ट टाइम से मैं क्लास स्टार्ट करूं और आप लोगों को एग्जैक्ट वो टाइम दूं जो आप लोगों के लिए है. ठीक है. बाकी मैं अभी रिगार्डिंग दिस मैं अभी सर से बात करता हूं, जैसे मैंने बोल दिया था आपके सामने, लेकिन आप लोगों की क्लास एग्जैक्ट 11 o'clock स्टार्ट होगी. ठीक है. जब बच्चे का बर्थडे होता है ना तब उसको 1 दिन का ऑफ दिया जाता है, होता है ना. लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जिस दिन मेरी शादी थी
मैं उस दिन भी क्लास लेके गया था, और आज मेरी एनिवर्सरी है, आज भी क्लास लेने आया हूं। ठीक है, और आज प्लानिंग ये है कि मैं आज जो क्लास लूंगा ना, वो आज ज्यादा क्लास लूंगा, आज ज्यादा काम करेंगे हम, ये बच्चों के लिए होगा। जितनी हम रेगुलर क्लास लेते हैं ना 10:30-11 बजे तक रात को, आज हम प्लान ये है कि आज हम रात को 2 बजे तक क्लास लेंगे, आज ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए है कि हमें भी ये लगता है कि भाई जो आज हम सस्टेन है, क्योंकि टीचर को टीचर सामने बैठा हुआ स्टूडेंट बनाता है, टीचर कभी टीचर नहीं बनता। टीचर कब टीचर बनेगा? जब सामने वाला स्टूडेंट बहुत बेहतरीन होगा। और हम तो अभी आप लोग की तरह सीख रहे हैं डेली, आप लोग की तरह रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, और बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, इसी प्लान के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है, कई बार ऐसा होता है मेरे मन में ये चीजें आती हैं तो मैं आप लोगों को शेयर कर लेता हूं कि किसी के हाथ में खाली कटोरा देख ये मत सोचना कि वो मांगने आया है, हो सकता हो वो सब कुछ लुटा के आया हो। कुछ चीजें हैं मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूं। ये आप ये लगा लो कि थोड़ा सा हमें ये लगता है कि भाई मेरे सामने जो आप लोग हैं वो फ्यूचर के ऑफिसर्स हैं, और मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।